সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত থকা ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেৱ। এয়া আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত। আমি সকলোৱে আজি গৌৰৱান্বিত আৰু সৌভাগ্যৱান। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰৰ ৰূপহী পথাৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আয়োজিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৮৫তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ আপোনাক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ হৈ অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। All of us feel honored and fortunate to have Honorable Modi ji here at the occasion. We extend a hearty and warm welcome to you, Honorable Prime Minister Sir. We are fortunate enough to have your gracious presence at the Sahitarathi Lakshminath Bejborua Samanaya Khetra, Rupohi Pathar, Sivasagar, Assam. আজিৰ দিনটো অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তথা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে অতিকৈ স্মৰণীয়, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদীজী আজিৰ এই সভাত সশৰীৰে উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰি এই সভাক মহিমামণ্ডিত কৰি তুলিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আজি সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে আপোনাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত উন্নতিৰ ন সপোন লাভ কৰাৰ লগতে বিশ্ব দৰবাৰত নিজকে সবল প্ৰতিষ্ঠাৰ সপোন ৰচা আৰম্ভ কৰিছে। আপোনাৰ স্বপ্ন পিপাসু নেতৃত্বই সমগ্ৰ দেশবাসীৰ হৃদয়ত নতুন আশা আৰু উদ্দীপনাৰ জোৱাৰ আনিছে। হে মহোদয়, জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ পদৰেণুৱে সুবাসিত আৰু পবিত্ৰ কৰি তোলা এই অসম ভূমিত আপোনাক আদৰণি জনাবলৈ পাই আমি অতিশয় গৰ্বিত। This is a memorable day for the countless devotees thronging the annual convention as well as for the people of Assam, as the Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji has graced the occasion by his presence here. Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a Muga coat and salang by our Honorable Padadhikar of Sremant Sankaradeva Sangh. মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদীজী এটি মুগাৰ চোলা আৰু এখনি চেলেঙেৰে সম্বৰ্ধনা জনাব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মাননীয় পদাধিকাৰ শ্ৰীযুত ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাদেৱে।
Honorable Prime Minister will be felicitated with a jappi by our Pradhan Sampadak of Sremant Sankaradeva Sangh, Babul Bora. Amar Manoniya Pradhan Mantri Dangoriyak eti japire সম্বৰ্ধনা জনাইছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা দেৱে। Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a sarai by the Padadhikar of Sremant Sankaradeva Sangh. Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a memento of Sremant Sankaradeva Sangh, and this memento will be presented jointly by our Padadhikar and our Pradhan Sampadak to our Honorable Prime Minister. Amar Honmaniya Pradhan Mantri Narendra Modi Dangoriya Debok eti jutia bhabe eti memento pradan koribo Sremant Shangkaradev Sanghor Pradhan Sampadak aru Padadhikare. Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a gamusa and a silk coat by the President of the Reception Committee, Srijut Rajanikanta Dattadev. Obhyorthana Committee Sabhapati Srijut Rajanikanta Dattadeve Amar Pradhan Mantri Mohodoyok ekhoni gamusa aru eti pator sulare সম্বৰ্ধনা জনাব। Our Honorable Prime Minister will be felicitated an emblem of Ranghar, a cultural heritage of the Ahom monarchy, and a sarai by the General Secretary of Reception Committee, Sri Ananda Kumar Bora. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji will be felicitated with a sarai by the General Secretary of Reception Committee. Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a gamusa and a stall by our Honorable Vice Chancellor Dr. Kandarpa Kumar Deka of Mahapurusha Sremant Sankaradeva Vishwavidyalaya, Nagaon. Nagaon Mahapurush Sremant Sankaradeva Vishwavidyalayor Upacharya Dr. Kandarpa Kumar Deka Debe Amar Pradhan Mantri Mohodoy Dangoriyak ekhoni gamusa aru ekhoni stolere সম্বৰ্ধনা জনাব। Our Honorable Prime Minister will be felicitated with a memento and a kit containing some documents of MSSV Nagaon by the Honorable Registrar Sri Ratul Chandra Bara. Now, our welcome address will be delivered by Mr. Babul Bora, the Pradhan Sampadak of Sremant Sankaradeva Sangh. Sremant Shangkaradev Sanghor Pradhan Sampadak Sri Babul Borai tekhetor adoroni bhashon pradan koribo. Krishna, Jai Guru Shankara, Honorable Prime Minister of India, Srijut Narendra Modi ji, Honorable Padadhikar Sremant Sankaradeva Sangh Bhavendranath Deka, Honorable Minister Sarbananda Sonowal, Honorable Minister Mr. Dharmendra Pradhan, Honorable Ex-Minister Himanta Biswa Sharma, MP Kamakha Pasatrasa, Professor Nogen Choikya, Gyanapith Awardee Dr. Balasand Nemere, Sejat Mohan Chokla, Professor Kandarpa Kumar Deka, VC Mahapurush Sremant Sankaradeva Vishwavidyalaya, Pradeep Jyoti Mahanto, the Professor Tesfur University,
Ratul Chandrawara, Registrar, Mahapurush Sremant Sankaradeva Vishwavidyalaya, President and Secretary, Sremant Sankaradeva Sangh Reception Committee, and other dignitaries. I, on behalf of Sremant Sankaradeva Sangh and the people of Assam, have great pleasure to extend heartily welcome Sri Narendra Modi ji for his gracious presence in the convention. We are particularly glad that in the long 85 years history of Sremant Sankaradeva Sangh, you are the first Prime Minister of India and country to attend the annual convention of Sremant Sankaradeva Sangh, which is the largest social, cultural, religious, and democratic organization in the entire Northeast India. The Sangha has about 7,000 primary units in total of about 30 lakh members. We do welcome you, sir, to the place once upon a time. It is the capital of great Ahom kings. You have also come to address the people who are highly inspired by the Mahapurush Sremant Sankaradeva, who was not only the religious preceptor, but the former founder of Assam, Assamese society, above all was to great humanity. I also welcome Sri Sarvananda Sonowal, Honorable Minister, Dharmendra Pradhan, Honorable Minister, Honorable Ex-Minister Himanta Biswa Sarma, former Minister, Sri Kamakya Prasad Chasa, and always inside the Sangha for its all-round development. We also welcome to all other dignitaries present on the dais. I welcome all the delegates and members of Sremant Sankaradeva Sangh, all the invited guests, and all other who are present in this meeting. The reception committee, with the help of the people of Sivasagar and the other, has tried to organize the convention as good as possible. However, there may be some omissions and commissions in their efforts. I request all of you to kindly bear with us and request for your kind cooperation in making this convention a great success. Sremant Sankara Hari Bhakatara Jana Jana Kalpataro Tahanto Binai Nai 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 Amara Paramaguru. Thank you. Okay. We offer our thanks to Mr. Babul Bora. Now, we request our Honorable Padadhikar, Srijut Bhabendranath Dekadev, to deliver his speech. Krishna, Jayaguru Hankar Harbogunakar Zakari Nahike Upam to Hari Saranako Reno Hatakuti, Bariko Koruhu Pranam, Bariko Koruhu Pranam. Param Hanmanio Bharatborhor Manunio Pradhan Mantri Narendra Modi ji, Teketor Logot Hotithok Hoyoha, Bharat Sarkar Manunio Mantri, Sarvananda Sonowal ji, Aro Jitendra Pradhan ji, Amar Monsot Bobisto Nano, Gondamanda Bisto, Otiti Hokol, Obhagota Hokol, Gunigani Hodjon Hokol, Aro Homavito Hudibrindo, Ami Hololuke, Sagota Hon Jonaiso Apna Hokoluke, Arbiheke, Amar Hokolure, Ziami Odira Agrohare Opakere, Reisilu, Amar Hokolure Adronio, Aro Honmanio, Amar Srodhar Patro, Bharatborhor Pradhanamantri Dangori Amar Mazolu Ahise Ami Tekerok Sagota Honmahon Jonaisu. I do extend my heartfelt greetings, congratulations, and welcome to the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, along with his cabinet colleagues, to our midst. We feel elated, we are inspired, and we hope and trust that because of his gracious presence over here, on the occasion of the 85th
annual conference of this historic occasion, which has been held here with a 4-day-long program. We started here yesterday, and it will continue up to the 7th of this month. So it's this particular conference is a historic occasion in the entire history of our organization, Sremant Sangha, because we did not get earlier, even though requests and appeals were made to the Honorable Prime Minister of India earlier also, but we did not get this opportunity to welcome him today. Narendra Modi ji had come over here, and he had got a special distinction and special identity and special honor. So he had achieved tremendous success in putting the step of Indian development in a new progress and in a new dimension. And the honor and prestige of our Indian nation has been upheld properly through his able leadership in the international arena. So it's a special achievement on his part during these last few months as the leader of our nation. So we are behind him. We do hope and trust that in his able and efficient guidance and leadership, India will march forward in the paths of progress and development in the near future. And then about our organization, he has already come to know about the vastness of this unique organization, Sremant Sankaradeva Sangh, which consists lakhs of the members of the entire Northeast area, Northeast region. And then there's lakhs of members of our organization. We are eagerly waiting for his arrival here, and we are actually very happy that we are getting him so closely in our midst. So I do extend my heartiest welcome to him once again. And then about Mahapurush Sremant Sankaradeva, I want to speak one or two sentences. You know that Sremant Sankaradeva, the most versatile genius, an uncomparable genius in the field of religion, religious resurrection and religious reformation. So Mahapurush Sremant Sankaradeva was, as has been rightly described by his ardent disciple, Mahapurush Madhavdeva, Sarva Gunakara, that means the embodiment of all the qualities of the virtues of human being. So he was a unique figure, the incarnation of God. We do believe that we, the followers of his cult of Bhakti, we do believe that he was God incarnate. He was the incarnation of Lord Krishna. So, Tribhuvana Vandana Daivoke Nandana Johori Marala Kankha, Jagajana Tarana Deva Narayana Hankara Takeri Ankha. So, Sankaradeva was the incarnation of that Lord Krishna, who has been the embodiment of all the qualities, all the virtues, and he is the grace of all gods. So, in fact, you know that the concept of monotheism, the concept of oneness of God, supremacy of God, that has been a special contribution in the spiritual history of India by our Sankaradeva, the Saint Sankaradeva. And he was, as I have already told you, that he was a versatile genius. He was not only the propounder, he was not only the preacher of religion, he was an architect of society, he was an artist, he was a lyricist, he was a poet, he was a literature, he was a social organizer, he was a dramatist, he was an actor, and what he was not. So he was actually the embodiment of all the possible virtues and qualities, attributes of that has been bestowed on us as human beings by the Supreme Creator, Lord God Krishna. So one of the most important features of his doctrine, the cult of Bhakti, is this, that through the propagation of the cult of Bhakti in the entire Northeast region, he had assimilated, he has brought about a unique assimilation, unique integrity, and unique unity among the people belonging to the diverse communities, belong to diverse ethnic groups, belong to diverse castes of this entire region. And this age-old disease of the Hindu dharma, Hindu religion or Arya Sanatana dharma, there is casteism. So that has been removed totally from here. So he had dreamed the oneness of the society
and then he had removed the casteism, he had removed the untouchability, and he had brought about the unique cohesion and integrity and unification among the diverse people of the entire region. So that was his unique contribution. And moreover, another important point is there. He had brought about an assimilation of the religion and the life. So he has brought the religion to the human life itself. So this assimilation, the integration between the doctrine and the real life, that has been made possible by Sremant Sankaradeva. And another unique point is there, in those days, in the medieval age, when most of the part of India also were in the age of darkness was prevailing, where several, new Vaishnavite leaders were there, new Vaishnavite religious reformators were there, gurus were there. But then, Srimanta Sankaradeva was the only saint, only one guru who could dream the oneness, the Indianness. So he has extolled the virtues of our great beloved country, India, Bharata Borish, Dhunna Dhunna Koligal, Dhunna Nurut Anubhal, Dhunna Dhunna Bharata Borisho. So this unique quality is there. And as already, also I have already told you that my time is very short. So now, with these few words, I have highlighted our organization is based on the socio-cultural and religious ideals of Srimanta Sankaradeva, and we are striving, we are trying our level best to form a new society full of peace, full of love, full of fraternity, full of unity, devoid of all sorts of this violence and all that. So we hope and trust that our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, will look into these matters, and we have a few words of appeal to him. And now I am, our appeal is this, that for the sake of the speedy economic growth and development of Assam, we like to bring certain issues to his notice. And our great, actually, hope and trust is this, that we have established our university, beloved university, that is Mahapurush Srimanta Sankaradeva Vishwavidyalaya under the Private University Act, and we will hope and trust that we will get the nourishment, we will get the good will and good wishes of our Honorable Prime Minister in respect of the infrastructure development of our university. And then a few issues have been raised to his honor: extension of the broad gauge railway line on behalf of the people of our entire region, extension of the broad gauge railway line to all the parts of Assam, and construction of double railway track throughout Assam, number one. Two, to take steps to declare birthday of our Mahapurush Srimanta Sankaradeva as the Maitreyi Day, Maitreyi Day, Maitreyi Divas, not Maitreyi Day, Maitreyi Divas, to be observed throughout India. This is second, and to take appropriate step to bring back the Brindavani Basra, prepared by Srimanta Sankaradeva way back in the 16th century from the British Museum. So that I think that they will take the initiative, and construction of a new bridge over the Brahmaputra connecting Sivasagar and Dhukuahana Dhamaji, which has been reiterated here. This has been already sent. And then to take appropriate step to revive the dying industries under the public sector and rejuvenate the industries established by the central government in Assam for the economic development of the any region. And also lastly, and but not least, to utilize the water resources of the mighty Brahmaputra and its tributaries to convert it as a boon to the people of Assam. With these few words, I do extend my, once again, the heartiest welcome to your honor, Honorable Prime Minister Modi ji, sir. Thank you very much. Jai Guru Hankar. Along with our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, we have among us Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Union Minister of State, Petroleum and Natural Gas. We request our reception committee to felicitate Shri Dharmendra Pradhan. Kendriya Mantri Shri Jut Dharmendra Pradhanok Obhyorthana Committee Falar Pora Sambardhana Janaboloi Anurodh Janoa Hol. Now, we request the reception committee to felicitate Shri Jut Sarbananda Sonowal, Honorable Minister, Government of India.
অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ ফালৰ পৰা শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অভ্যৰ্থনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। Now, we request Mr. Sarbananda Sonowal to deliver his speech. Mr. Sarbananda Sonowalok তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। জয় গুৰু শংকৰ। আজি এই আধ্যাত্মিক ক্ষণত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া আৰু জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভালচন্দ নেমাৰে ডাঙৰীয়া, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ পদাধিকাৰ শ্ৰদ্ধেয় ভবেন্দ্ৰনাথ ডেকা ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক বাবুল বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ কন্দবৰ কুমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়া, পঞ্জীয়ক শ্ৰদ্ধেয় ৰাতুল চন্দ্ৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি মঞ্চত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট অতিথিসকল আৰু সমবেত বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দ, আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোটিলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাক আৰু বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দক মই কোটি কোটি প্ৰণাম যাচিছোঁ। আজি আমি সকলোৱে সৌভাগ্যৱান, গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আমি আজি প্ৰাণ পাই উঠিছোঁ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ বুকুত গুৰুজনাই আজি অসমীয়া জাতিক আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ পোহৰ দিছে। গতিকে সেইগৰাকী মহান গুৰুৰ সান্নিধ্য পাই আজি অসমৰ যুৱ সমাজ উৎফুল্লিত হৈছে আৰু শক্তিশালী হৈছে আধ্যাত্মিকভাৱে। মই ভাবোঁ অসমীয়া জাতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব বিশ্বৰ বুকুত। মই দীঘলীয়া বক্তব্য দিব বিচৰা নাই। আমি সকলোৱে আজি দিনটো বিশেষকৈ গুৰুজনাৰ কৃপাদৃষ্টিৰ ফলত অসমীয়া জাতিয়ে স্বাধীনতাৰ যোৱা 68 বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ এটি উদ্যোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প লেপেট কটাত 10,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা এই গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিলে আৰু এই গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প সেইসকল মহান শ্বহীদৰ মহান ত্যাগৰ বাবে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, যিসকলে 6 বছৰীয়া গণ আন্দোলনত প্ৰাণ বলিদান দিছিল। গতিকে সেইসকল মহান শ্বহীদকো মই আজি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণাম জনাবৰ বাবে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। মই সমগ্ৰ অসমৰ গুৰুজনাৰ অনুগামীসকলৰ হৈ মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতে আজি গুৰুজনাৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিলে। আমি উৎসাহিত হৈছোঁ অসমীয়া সন্তান হিচাপে। গতিকে আগন্তুক দিনত মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ তেখেতৰ আমি নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ নিমিত্তে সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটি মহৎ প্ৰকল্প হাতত লৈছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে। গতিকে এই প্ৰকল্পৰ কাম আগন্তুক দিনত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ দায়বদ্ধ থাকিব আৰু ইয়াৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আগন্তুক দিনত ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আগবঢ়োৱা হ'ব। ধন্যবাদ। জয় গুৰু শংকৰ। The countless devotees gathered here today at Rupohi Pathar are awaiting eagerly to listen to the valuable words of our Honorable
Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, we request most humbly and respectfully Mr. Narendra Modi ji to overwhelm us with his valuable speech. जय गुरु हंकर। मोई नवो वैष्णव धर्म प्रवर्तक महापुरुष श्रीमद शंकर देवोलय हतकोटि प्रणाम जोनयसु। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी और असम के होनहार नेता श्रीमान सर्वानंद जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमद संकरदेवा संघ के पदाधिकारी श्रीमान भावेंद्रनाथ देका, श्रीमान बाबुल बोरा, प्रोफेसर के देका, प्रोफेसर नागेंद्र साइकाई, प्रोफेसर प्रदीप ज्योति महंत, महाराष्ट्र से विशेष रूप से पधारे हुए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर निमाड़े जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान कामाख्य प्रसाद ताशा, भाई श्री हेमंता विश्वा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूं, इनके सब योजकों को प्रणाम करता हूं कि ऐसे पवित्र अवसर पर मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि 5 शताब्दी से भी पहले किसी व्यक्ति को, जबकि उन दिनों में न कैमरा थे, न अखबार थे, न टीवी था, न टेलीफोन था, उसके बावजूद भी 5 शताब्दियां बीतने के बाद भी हम सब उस महापुरुष को याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। वो कैसी विलक्षण प्रतिभा होगी जिन्होंने सदियों तक समाज पर ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ा है। ऐसे श्रीमद शंकरदेव गुरुजन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और उनकी विशेषता देखिए, यहां तो सब लोग बैठे हैं, वे उनकी हर बात को जानते हैं, उनकी हर बात को जीने का प्रयास करते हैं, सदियों पुरानी उनकी बातों को आज भी जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और इसलिए
मैं उनके लिए कुछ कहूं उससे ज्यादा आप सब उनको भली भांति जानते हैं। पर जब हिंदुस्तान के अन्य भागों में जब उनके विषय में लोगों को जानकारी मिलती है तो बड़ा ताज्जुब होता है कि उन्होंने अध्यात्म को जीवन के रंग से रंग दिया था। सामान्यतः हमारी अध्यात्म की सोच ऐसी रही जो कभी कभी सहज जीवन को नकारती रही, लेकिन श्रीमद् शंकरदेव जीवन के रंगों में ही आध्यात्मिकता भरने में एक नए मार्गदर्शक बने। कोई सोच सकता है अध्यात्म और नाट्य का संबंध, कोई सोच सकता है अध्यात्म और कला का संबंध, कोई सोच सकता है अध्यात्म और नृत्य का संबंध, कोई सोच सकता है अध्यात्म और गीत का संबंध। उन्होंने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज वृत्ति प्रवृत्ति थी, उसको ही अध्यात्म के रंग में रंग दिया। और उसके कारण श्रीमंत शंकरदेव आज भी हमारे लिए उतने ही रिलेवेंट है जितने कि उनके अपने जीवित काल में थे। दूर सुदूर आसाम में रहने वाला ये संत, ये आध्यात्मिक महामानव 5 शताब्दी पहले ये कहे कि हम ऐसे आसामी बने, ऐसे आसामिया बने कि हम उत्तम भारतीय बने। राष्ट्रवाद का संदेश उसने दूर उतनी शताब्दियों पहले कोई महापुरुष देता है। वे ये भी कहते हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, लेकिन राष्ट्र निर्माण करने के लिए भी व्यक्ति निर्माण यही हमारा मार्ग होगा। और इसलिए जन जन को जोड़ना, समाज के ताने बाने को ऐसे जोड़ना कि समाज एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरे जो अपने बलबूते पर विकास भी करे, आध्यात्मिक चेतना भी जगाए और संकटों को भी पार कर ले। ये ऐसे अध्यात्म महापुरुष थे जो शास्त्र में भी समर्पित थे, शस्त्र में भी समर्पित थे। उन्होंने अपने ही भक्तों को आतताइयों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, बलिदान देने के लिए तैयार किया। क्यों? मातृभूमि की रक्षा करनी है, आध्यात्मिकता की रक्षा करनी है, महान उत्तम उज्जवल परंपराओं की रक्षा करनी है। आज भी हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, भले कम हुई हो, लेकिन कहीं कहीं जब वो बुराइयां नजर आती हैं तब कितनी पीड़ा होती है। हिंदू समाज की एक विशेषता रही, हजारों साल पुराना ये समाज है। समय समय पर उसमें कुछ विकृतियां भी आई, बुराइयां भी आई, लेकिन इस समाज की विशेषता थी कि अपने में से ही ऐसे महापुरुषों को उसने पैदा किया कि जो खुद ही समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए। ये छोटी बात नहीं है। आज भी कहीं पर अस्पृश्यता के खिलाफ बोलना हो, छुआछूत के खिलाफ बोलना हो, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अब जरूरत क्या है। श्रीमद् शंकरदेव ने
5 शताब्दी पहले अस्पृश्यता के खिलाफ, ऊंच नीच के भेद के खिलाफ, सामाजिक एकता के लिए जहां गए वहां उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। उस जमाने में कितने कष्ट झेले होंगे और ये संदेश पहुंचाया कि समाज में ये जो विकृतियां हैं, विकृतियां खत्म होनी चाहिए। समाज में जो बुराइयां हैं, बुराइयां खत्म होनी चाहिए। युगों के अनुसार कभी कभी बुराइयां बदल जाती है। आज के समय में श्रीमद शंकरदेव के रास्ते पर और इतने समर्पित सेवकों की आप लोगों की टीम है। सरकार को इतना बड़ा कार्यक्रम हो तो 50 बार सोचना पड़ता है। और मैं देख रहा हूं, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा हूं, जहां देख रहा था लोग ही लोग नजर आ रहे थे, लाखों की तादाद में। ये कैसी आध्यात्मिक ताकत है, ये कैसी सात्विक ताकत है। हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमारा सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, उसमें ये आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति, सात्विक शक्ति, इसका बहुमूल्य है। और उसकी शक्ति को जोड़ने से राष्ट्र तेज गति से आगे बढ़ता है। आज भी रिसर्च के काम, साहित्य के काम, शिक्षा के काम, लोक संस्कार के काम, समाज का कल्याण करने वाले काम आज श्रीमद शंकरदेव संस्थान के द्वारा चल रहे हैं। ये बात सही है, इतने साल हो गए तो कभी छोटा मोटा खट्टा मीठा आ जाता है, लेकिन अच्छा यही है कि सब मिलकर के काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें, तो ये ताकत और उभर करके आएगी और समाज की एक नई शक्ति बन करके रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सात्विक प्रवृत्ति चल रही है, शिक्षा की प्रवृत्ति चल रही है और बहुत सी बातें संस्था के प्रमुख लोगों ने मेरे सामने रखी है। मैं उन सारी बातों का गहराई से अध्ययन करूंगा और उसमें से जो भी हो सकता है उस करने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये काम आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे आसाम में ही स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो, अगर आप लोग मन में ठान लें तो सरकार की जरूरत पड़ेगी क्या? आसाम कभी गंदा होगा क्या? अगर आप लोग तय कर लें, श्रीमद शंकरदेव के नाम से जय गुरु शंकर बोल करके निकल दें, मैं नहीं मानता हूं आसाम में कोई गंदगी रह सकती है। स्वच्छ भारत का अभियान आसाम में सिरमौर बन सकता है। हमारे यहां बालकों के लिए पोलियो का खुराक, बालकों के लिए वैक्सीन, ये सरकार का बहुत बड़ा अभियान होता है। एक भी बालक वैक्सीन के बिना रह न जाए, एक भी बालक पोलियो के खुराक के बिना रह न जाए, ये ऐसा बड़ा काम है। अगर हमारे इस संस्थान के लोग उसके साथ लग जाएं, तो मैं नहीं मानता हूं सरकार अगर कम पड़ जाए, लेकिन आप कम नहीं पड़ेंगे और समाज की ताकत बनेंगे, मेरा विश्वास है। सरकार और समाज की शक्ति जुड़नी चाहिए। सरकार और समाज की शक्ति मिलकर के निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़नी चाहिए। तब जाकर के हम श्रीमद शंकरदेव जिस प्रकार का भारत चाहते थे, वो भारत हम बना सकते हैं। शंकरदेव के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। और इस आध्यात्मिक अवसर पर मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इतने उत्तम काम कर रहे हैं, इतने सात्विक काम कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार आपके साथ खड़े रहने में कभी पीछे नहीं हटेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु शंकर।
Honorable Prime Minister Sir, we extend our heartful thanks and gratitude for your speech. সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণে আজি অগণন ৰাইজৰ হৃদয়ক আন্দোলিত কৰিলে। তেখেতলৈ আমাৰ হিয়া ভৰা উলক যাচিলোঁ আৰু লগতে আমি তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ।